Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study the Hindu newspaper for 12th of July 2021. आज 12th जुलाई है 2021. आज का हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं. क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं. आज पेज नंबर 1 पे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. पेज नंबर 1, if you go through it in the Hindu newspaper, there are really many important articles that I have come across. So let us start understanding these articles. What are these articles, etc. Now on the first page you will find this particular article, New Population Policy Keeps All Sections in Mind. I'll make a separate lecture on this particular article. I may not include it in this Hindu editorial, in this Hindu newspaper analysis, because it's really a very deep article that we need to understand very clearly from the perspective of GS paper 2 and also GS paper 4 and essay paper. 3 पेपर्स के पर्सपेक्टिव से ये आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे. ठीक है, तो बारिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर. Let's start. The class PDF will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can download it directly from there. So the first important article is on page 1, Shuttle to Space. You will see this picture over on page 1. Page 1 पे आपको ये picture दिखेगी जिस पर ऊपर title होगा Shuttle to Space. So Richard Branson and his crew, they were seen on board the Virgin Galactic's passenger rocket plane VSS Unity before starting their untethered ascent to the edge of space above Spaceport America. This crew successfully flew to space and returned on Sunday. Now here very important topic, or you can say a word you will study, that is the sentence edge of space. यहाँ पर एक बहुत important sentence आप पढ़ोगे जो कि है edge of space. तो ये जो crew है रिचर्ड ब्रांसन का, ये space में गया, edge of space तक गया और वापस संडे को आ गया. The first question is, who is this Richard Branson? So Sir Richard Charles Nicholas Branson, he is an English business magnate, adventurer, investor, author and commercial astronaut also. And he, in the 1970s, he founded the Virgin Group, which today controls more than 400 companies in different fields. So Virgin Galactic, it's a British American space flight company that operates in the US. ये कंपनी जो थी ये भी रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन ग्रुप के अंडर ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, और वर्जिन ग्रुप का इसके अंदर 24% स्टेक भी है. तो वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रांसन जो है ये पहले बिलियनियर बने हैं जो स्पेस में गए हैं. ठीक है, तो 11 जुलाई 2021 को ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन, he took off from a base in New Mexico aboard the VSS Unity, which is a space plane. Please underline this. What is this VSS Unity? ये एक space plane है, specifically developed by Virgin Galactic. ठीक है, इसे स्पेसिफिकली इसको डेवलप किया है रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. और ब्रांसन जो थे वो एज ऑफ स्पेस तक होकर आए हैं इस प्लेन में, जो कि 89 किलोमीटर्स है अर्थ के सरफेस के ऊपर. Let us understand first what is this VSS Unity. ये Unity की 22 क्या है? ये वर्जिन गैलेक्टिक का नेक्स्ट रॉकेट पार्ट टेस्ट फ्लाइट होगा. ठीक है, स्पेसशिप होगा. और ये जो मिशन है VSS Unity का, एज पार्ट ऑफ द मिशन द क्रू विल बी फ्लाइंग टू द एज ऑफ स्पेस ऑन July 11, दैट विच इट डिड. अब दिस विल बी द 22nd मिशन. VSS Unity का Unity 22nd मिशन है जो एज ऑफ स्पेस तक पहुंचेगा. The main question from prelims perspective is, and from GS paper 3's perspective is, what is edge of space? I'll make a separate video on edge of space topic also. Edge of space topic पे मैं एक separate video बनाऊंगी. यहाँ I button पे आपको वो मिल जाएगा. You will find that topic in the I button over here. ठीक है, so just click on the I button over here and you will get the topic edge of space. Now the objective of the mission is Unity 22. It will focus on testing the cabin and customer experience. Currently, though additional test flights, they still remain before the Virgin Galactic plans to commence or to start commercial service in 2022. India के लिए क्यों ये important है? Why it is important for India? Because in the crew there was an Indian also, Sirisha Bandla. She was an astronaut born in India. She went to the edge of space with the rest of the crew, and this is very important because she will be the third woman of Indian origin to go to space. कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद सिरिशा बांदला थर्ड इंडियन वुमेन बनी है जो एज ऑफ स्पेस तक गई है. राकेश शर्मा भी एक इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे बांडला से पहले, सिरिशा बांडला से पहले. So Virgin Galactic's suborbital spacecraft, they are air launched from beneath a carrier aircraft White Knight 2.
And the space vehicle can climb to an height of around 90 kilometers, enough to give the passengers a few minutes of weightlessness. If you have seen the images that they have captured in this mission, you will see that they are flying. Weightlessness का in the spacecraft weightlessness हो जाती है कुछ minutes के लिए, तो उस केस में इन्होंने अपनी इमेज भी भेजी थी। और फिर वो देखते हैं जब 90 किलोमीटर्स बियॉन्ड द अर्थ सरफेस दे सी द अर्थ कर्वेचर फ्रॉम द एज ऑफ स्पेस। We have a similar New Shepard rocket system also. Amazon founder and billionaire Jeff Bezos space company, which is known as Blue Origin. Please underline this. Jeff Bezos जो Amazon के founder हैं, उनकी कंपनी है ये space company Blue Origin. इसने recently conclude किया था एक online auction for the first seat on New Shepard, which is a rocket system. ठीक है, which is meant to take tourists to space. ये एक नया rocket system निकाला गया है New Shepard, जो टूरिस्ट को स्पेस में लेकर जाएगा। अब आप इधर उधर कंट्रीज में डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो टूरिज्म के लिए, अब आप सीधा स्पेस में भी घूमने जा सकते हो। तो ऑनलाइन ऑप्शन हुआ था, इसमें पहली सीट में को इन्होंने ऑनलाइन ऑप्शन में जीता जेफ बेजोस की कंपनी ने। द विनिंग बिडर विल गेट टू फ्लाई अबॉर्ड न्यू शेपर्ड अलोंग विद बेजोस एंड हिज ब्रदर व्हेन इट टेक्स इट्स फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट ऑन जुलाई 20, व्हिच मार्क्स द 52nd एनिवर्सरी ऑफ नील आर्मस्ट्रांग एंड बस एल्ड्रिन्स मून लैंडिंग एज वेल। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है, अनअकैडमी प्रॉमिस। ये अनअकैडमी प्रॉमिस क्या है? अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस पर तैयारी करने का यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, और अगर बाय चांस आपका पहला बारी में क्लियर नहीं होता है 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी यूपीएससी में अगर फाइन आप लिस्ट में नहीं आ पाते हो, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अनअकैडमी प्रॉमिस करता है कि वो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन देगा आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने का। ठीक है, तो इस प्रॉमिस का जो ऑफर है ये 14 जुलाई तक ही है, और इस ऑफर में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो 14 जुलाई से पहले आप इस ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? अनअकैडमी पर 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेकर। कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। इस कोड को यूज करें फॉर 10% discount. The links are given below in the description box about the various batches that we have launched, which are starting from 14 July. Make sure that you subscribe today. Next important article, World Population Day. CM Yogi unveils UP's new population policy. So on page number 1, you will find this article, New Population Policy keeps all sections in mind, says Yogi Adityanath. So उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी न्यू पॉलिसी लॉन्च करी है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए फॉर 2021-30। इसको जुलाई 11 को रिलीज किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। प्लीज अंडरलाइन दिस, जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, जैसे जून 21 को आप योगा इंटरनेशनल योगा डे देखते हो। सो नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ अर्ज्ड फॉर कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच to control the population and to provide better facilities to people. Now see, if population is in control, this is not harmful. ये harmful नहीं होता अगर हम population control की बात करते हैं। कुछ लोग बड़े offend हो जाते हैं, offend होने की बात नहीं है। हमारे अर्थ पे limited resources हैं, अगर हम limited resources में over population करने लगे, ज्यादा मूव हो जाएंगे उन्हीं limited resources के लिए, तो क्या होगा? सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ना अर्थ के लिए ना हमारे लिए। फिर हम देखते हैं बीमारियों में इंक्रीज आता है, वायरसेस में इंक्रीज आता है, इन्फेक्शन में इंक्रीज आता है। क्यों? क्योंकि हमने नेचर के लिए जगह छोड़ी नहीं, सारी जगह तो हमने हड़प ली है। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग हो जाते हैं उतना ज्यादा नेचर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि हम जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा नेचर से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक हम यही कर रहे हैं, नेचर से सिर्फ छीन रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच की बात की है योगी आदित्यनाथ जी ने। he has highlighted the community centric approach, because if the community is ready, then only we can control the population. So it is required to raise awareness about population in certain communities. Poverty and illiteracy are major factors. Population explosion के major factors क्या होते हैं? गरीबी और इलिटरेसी। जब पढ़े लिखे नहीं होते लोग, उन्हें समझ नहीं होती, तो क्या होता है? आप एक ही घर में देखोगे 8-8 बच्चे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, गरीबी बढ़ती है जब रिसोर्सेज कम है और लोग ज्यादा हैं, तो गरीबी बढ़ेगी। सो न्यू पॉलिसी विल बी रिलीज्ड इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स एम्बेडेड इन स्पिरिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये जरूरी है। यूपी का अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें तो वो 2.7% है। आइडियली 2.1% से कम होना चाहिए, बट 2.7% बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अचीव्ड आइडियल फर्टिलिटी
मोर्टेलिटी रेट, बट बिहार एंड यूपी आर एन एक्सेप्शन। 2011 का अगर पॉपुलेशन काउंट या सेंसस अगर हम देखें तो यूपी को मोस्ट पॉपुलस स्टेट कहा गया था, उसकी यूपी के बाद था महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो इसीलिए इस तरीके का जो अगर लेकर आए हैं आदित्यनाथ जी, तो एक तरीके से ये पॉइंट बात सही भी है। और आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा है कि जो जो पॉपुलेशन कंट्रोल में जो लोग जो कपल्स मदद करेंगे उन कपल्स को गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, बट अगर 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं किसी के तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलेंगे उन लोगों को। अंडर द पॉलिसी 5-pronged अप्रोच टू पॉपुलेशन कंट्रोल विल बी अडॉप्टेड। इट विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना हाइजीन और उतना ही ज्यादा आप इन्फेक्शन वगैरह देखोगे, हाइजीन कम होता है, इन्फेक्शन वगैरह बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी हेल्थ को इंप्रूव करने की भी कोशिश करेगी। गवर्नमेंट विल मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, अंडरलाइन दिस, ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स विच आर इशूड अंडर family planning program. Government will also be providing proper system for safe abortion as well. Over here, government will make efforts towards stabilization of population by providing solution for impotence and infertility. And efforts towards reducing infant and maternal mortality rate will also be made, ताकि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करके। पॉलिसी विल फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट्स फॉर केयर ऑफ एल्डरली एंड गिव इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर द यंगस्टर्स जो 11 से 19 साल की एज के ग्रुप में आते हैं। Efforts will be made to maintain the demographic balance across different communities and ensure easy availability of advanced health facilities as well. So these will be the objectives under the policy. On page 1 you will find a news, very important news. I'll just write it down. It is Dhami holds off, ये title है news का, holds off on the Kaavadyatra decision. This is the article on page number 1. On your left hand side you will see this article. ठीक है, so this article says that any decision on allowing the Kaavadyatra this year will be taken after discussions with neighboring states. Uttarakhand's new chief minister Pushkar Singh Dhami has said this. So what is कावड़ pilgrimage of सावन? सावन के महीना चल रहा है तो सावन के महीने में ना कावड़ की यात्रा जरूर होती है. You must have seen these people carrying many decorated items or on their shoulders, wooden planks on their shoulders and with Ganga Jal as well. So what is this? Kaavad pilgrimage is an annual month-long yatra in the Hindu calendar month of Shravan. बहुत पावन यात्रा होती है. It's a very प्योर यात्रा, वेरी पावन, वेरी सेक्रेड यात्रा, राइट. कावड़ पिलग्रिमेज, कावड़ तीर्थ यात्रा जो होती है वो साल में एक बार होती है और महीने तक चलती है. wherein you will see people in saffron clad clothes. They are Shiva devotees. They walk barefoot in such you can say high temperature with pitchers of holy water from Ganga balanced between shoulders using decorated slings known as कावड़्स. तो यहाँ देखोगे गंगा का जल जो है वो लेकर इस प्लैंक, वुडन प्लैंक पर barefoot, बिना चप्पलों के ट्रैवल करते हैं. The water is used by pilgrims to worship Shivlingas at shrines of importance in one's village or town. And this form of Shiva worship has a very specific and special significance in the regions where there is Ganga river. Okay, so let us understand what is this Kaavad Yatra. So the legend of the ritual goes back to Samudra Manthan. You must have heard about Samudra Manthan in our Upanishads, in our Purans. आपने समुद्र मंथन की कथा जरूर सुनी होगी, which is famously known as churning of the ocean of milk. It is one of the best known episodes in Hindu mythology. From it many divine beings emerged. जब देव और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे ना, तो काफी डिवाइन बींग्स उसमें से निकले थे. लक्ष्मी माँ भी निकली थी, धन दौलत भी निकला था, जहर भी निकला था, हलाहल जिसको कहते हैं, which is a lethal poison which was drank by Lord Shiva. That is why his throat is bluish in color. So all the entities approached to Lord Shiva to consume this lethal poison that came out from the churning of the ocean of milk. As Shiva drank the poison, Parvati grabbed his throat in an effort to contain the poison and prevent it from affecting the worlds inside him. तो देखो Lord Shiva, it is said that this universe resides
under, or you can say inside Lord Shiva. So in order to protect that universe, Mata Parvati or goddess Parvati, she kept her hand on the over the throat of Lord Shiva so that the halal could not go beyond the throat. So as a result, Shiva's neck turned blue from the effect of the poison, which earned him the name Neelkantha. The poison still had an impact and his body was inflamed. So to decrease the effect of that poison, the practice of giving water to Shiva began. Another original story of this Kaavadyatra is connected with Lord Parshuram, who is also a devotee of Shiva and an incarnation of Lord Vishnu. The first Kaavadyatra was believed to have been undertaken by Lord Parshuram. While passing through a place called Pura in present-day UP, he had been struck by a desire to lay the foundation of a Shiva temple there. So it is said that he fetched Ganga Jal every Monday in the month of Shravan for Shiva's worship, and hence the Kaavadyatra started. So these are the different stories behind the origin of Kaavadyatra. On page number 8, you will find a very important, art news related to art and culture, and that news is the flooding of बिहार केसरिया बुद्धा स्तूपा. अब वहाँ क्या हुआ है, वर्ल्ड का फेमस केसरिया बुद्ध स्तूपा जो है वो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के. वहाँ पर वाटर लॉगिंग देखने को मिली है फॉलोइंग फ्लड्स इन सम नियर बाय पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. सो हियर द केसरिया बुद्धा Stupa is very important from the perspective of art and culture. Kesariya is a town in Bihar, India. It is the site of stupa built by King Ashoka. They can ask you which of the following is correct, pair is correctly matched. They will give you the name of the kings and the architecture they established. तो King Ashoka ने केसरिया का जो बिहार का स्तूपा है वो तैयार करवाया था. It is also known as Kesa Putta. And Kesariya stupa is 1 foot taller than the Borobudur stupa in Java. It is also taller than the second largest stupa at Gorkatora in Nalanda district. तो ईस्ट चंपारण में है, कहा जाता है ये टॉलेस्ट लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है और इसको 1998 में डिस्कवर किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा. अनअकैडमी शुरू कर रहा है नए बैचेस 14 जुलाई से 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए. हमारे पास है 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए फिनिक्स का रिवीजन बैच, क्योंकि 2.5 मंथ्स बचे हैं आपकी तैयारी को, आपके यूपीएससी सीएसई के एग्जाम को. तो 14 जुलाई से नया बैच रिविजनरी बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए. ऐसे ही हमारे पास 1 साल का बैच है 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए और 2 साल का 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए. तो आज ही अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब करें, यूज करें कोड अर्पिता10 ताकि आपको मिल जाए 10% डिस्काउंट आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी बैचेस के लिंक्स दिए हैं. सब्सक्राइब टुडे. So this was all for today. I hope you enjoyed this lecture. आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो क्योंकि आज हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर किए हैं. होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे और अगर नोट्स बनाना मिस कर दिया या वर्किंग प्रोफेशनल हो नहीं बना पाए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF पे मिल जाएगा. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन.